हेलो दोस्त, आज हम एक ऐसा प्रोस्थेटिक हैंड बनाएंगे जिसे आप अपने बायो सिग्नल द्वारा यानी कि अपने शरीर के सिग्नल द्वारा ही कंट्रोल कर सकें। क्या ये पॉसिबल है? Is it possible that you can attach a robotic hand, a prosthetic hand like this with your body and you can control it with your bio signal? So today we are going to make a similar thing. Let's have a look on how what we are going to make in today live session. So let me show you the video of a conceptual video of that. So here is the video. As you can see in the screen, in the computer screen, this is the video and this is the prosthetic hand. This is the prosthetic hand. So any disabled people with which have some problem with the arm can attach a prosthetic hand like this and able to control this prosthetic hand like this, as you can see in the video, like this, without any remote or without any other thing, just using the body signal. So we will try to make a similar thing. So our thing work like this using the bio signal like this. Let me show you the video of that. See, uh, our prosthetic hand works similar way like this. So this is what we are going to make. We are going to make a prosthetic hand or artificial hand that can be controlled using uh, our bio signal like this. So we are going to make the same thing today. So this kind of prosthetic can help the people who have some disability with your body and who want to attach a prosthetic hand with the body, and that can be not used that can't be controlled by you any remote control. They can be directly controlled using the body signal, using the thought, like actual hand, uh, uh, like you can see this uh, this can be controlled using the thought of the body, using a signal of the body. You can feel this hand like a natural hand, and you can able to control it like a natural hand without any remote control like this. So we are going to make the same thing today. तो आज हम एक ऐसा ही चीज बनाने की कोशिश करेंगे. तो चलिए बात करते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा एक प्रोस्थेटिक हैंड है, तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोस्थेटिक हैंड और बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोस्थेटिक हैंड है जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, 3D प्रोस्थेटिक हैंड। तो हमें एक 3D प्रोस्थेटिक हैंड की ज़रूरत पड़ेगी, 3D प्रिंटेड प्रोस्थेटिक हैंड कुछ ऐसा, जिसमें फिंगर्स हो और जिसको आप कंट्रोल कर सकें। इस प्रकार का एक प्रोस्थेटिक हैंड का आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप ये जो प्रोस्थेटिक हैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इनमूव रोबोट का है। आप इसे ऑनलाइन ओपन सोर्स है, आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और ऐसा प्रोस्थेटिक हैंड अपने घर पे बना सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं। आप कोई ओपन प्रोस्थेटिक हैंड और कोई भी अलग प्रोस्थेटिक हैंड भी खरीद सकते हैं। तो हमें एक ऐसा प्रोस्थेटिक हैंड की जरूरत पड़ेगी और हमें इसके लिए एक, क्योंकि हम इस प्रोस्थेटिक हैंड को एक सेंसर द्वारा कंट्रोल करेंगे जो कि हमारे बॉडी के बायो सिग्नल है उससे कंट्रोल होगा। तो हमें एक बायो सिग्नल सेंसर चाहिए। उस सिग्नल को कहते हैं जो हमारे मसल के सिग्नल को नाप सकता है, उस ऐसे सेंसर को हम ईएमजी सेंसर कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमायोग्राफी की मदद से हम अपने बॉडी में पूरे मसल्स मूवमेंट के सिग्नल को नाप सकते हैं। तो हमें ऐसा एक ईएमजी सेंसर चाहिए होगा। तो ईएमजी सेंसर बहुत सारे मार्केट में है। मैं ये ईएमजी सेंसर यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। ये ईएमजी सेंसर यूज कर रहा हूँ, ये रहा। ये ईएमजी सेंसर यूज कर, इसके साथ आपको चाहिए होगा कुछ इलेक्ट्रोड जो कि आपके सिग्नल में, जैसे कि ये हमारा हैंड हो गया, ये हमारा दिस like your hand. So whenever I move this hand, some signal is generated. So we need a certain electrode that need to be connected in my hand so that I can capture those signal using our sensor that I have shown earlier, and, and able to capture that, and using that those captured data I will able to control this prosthetic hand. So for that we need a electrode. उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोड चाहिए होगा। तो ये रहा कुछ कुछ इलेक्ट्रोड। आपको ऐसा कुछ इलेक्ट्रोड चाहिए होगा, ये आपको सिग्नल के सेंसर के साथ मिल जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रोड चाहिए होगा जो कि इस सेंसर के साथ या फिर जो भी ईएमजी सेंसर आप खरीदोगे उसके साथ मिल जाएगा। आप देख सकते हो इस प्रकार का ईएमजी सेंसर के साथ आपको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोड। This is our electrode. So our electrode, we have to fit the electrode in this like this. This is the electrode, and I have to fit those electrode in this like this. It fit the electrode like this, and
Again I feed this electrode like this. I feed the electrode like this, and this electrode goes here again, I can show you this. This is the electrode, and I will feed it like this. So these electrode attach with our hand like this. So we will attach this electrode on our hand like this, and this electrode captures our data. So if suppose that some disabled people don't have uh, this part of the hand, so they can attach the electrode in this part of the hand, in this part of the hand you can attach the electrode like this in this part of the hand, and then you can wear the prosthetic hand in place of this part of the hand like this, and you can able to control your prosthetic hand using your thoughts, like you think of the like you think to move the hand up or move the finger like this, and you will able to control this prosthetic hand like this, like in this video. You can see the video of the girl. So as you can see the video like this, you can control the prosthetic hand like this. So there is no remote control here. She is able to control the hand like a natural hand, but this is artificial hand. But she can able to control the natural hand with their thoughts using this biosignal. So this type of prosthetic hand can be used by disabled people, or you can able to create a full human body like a robot, and you can wirelessly control that. You can wirelessly put the robot in the warfare, or any robot army. You can create a robot army, or you can create your own personal robot, and you can put that robot anywhere. आप ऐसा एक robot बनाकर कहीं भी रख सकते हो, and you can wirelessly control that robot from anywhere using your biosignal. You move the hand in your home, you walk in your home, and the robot, like your duplicate robot, walk in the road in place of you. Your duplicate robot walk in the do the jobs in the office, or your duplicate robot will able to fight in the war. So you are actually controlling it from your home, and your robot, your duplicate human body, like this prosthetic hand, the duplicate robot hand is in the war and fighting with the pupil. So there are lots of things that very field where you can use it for the disabled people who don't have the hand, so they can able to attach the prosthetic hand like I've shown you in the girls video, or you can create a robot. So there are lots of things. So now let's go on our project. So I have already tell you हमें चाहिए होगा एक ऐसा सेंसर, एक EMG सेंसर, और एक इलेक्ट्रोड, और एक माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी एड्रीनो माइक्रो कंट्रोलर और ब्लूटूथ या फिर वाईफाई या फिर और कोई भी चीज आप अटैच करके उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप एड्रीनो माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हो। R52040 या Arduino Pro Micro, ऐसा एक माइक्रो कंट्रोलर को भी आप यूज कर सकते हो। इस माइक्रो कंट्रोलर को हम इस सेंसर से कनेक्ट करेंगे। इस सेंसर से हम इस माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करने के बाद हमें इस इलेक्ट्रोड को, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को इसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें कोड तैयार करना होगा। कोड क्या है? चलिए हम पहले कोड तैयार करते हैं। ये जो हमारा ईएमजी सेंसर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ईएमजी सेंसर है। इसमें 4 पिन्स है। इसमें एक वीसीसी है, एक जो कि वोल्टेज का पिन है, एक ग्राउंड पिन है, और एक पिन है एनालॉग आउटपुट का। सो जब भी आप मसल को अप डाउन ऐसे करके अप डाउन करोगे, तो या जो भी मसल का सिग्नल जो रीड हुआ है, ये इसके एनालॉग आउटपुट पिन, ये जो एनालॉग आउटपुट पिन है, यू कैन सी एनालॉग आउटपुट पिन, ये जो एनालॉग आउटपुट पिन है, इस पिन में आप देख सकते हो, जैसा कि मैं स्क्रीन पे अभी आपको दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये हमारा बेसिक सर्किट डायग्राम हो गया। तो आपको इसमें 2 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी, 2 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी, जो इस प्रकार से कनेक्ट होगा। और फिर इसका जो इसका वी प्लस जो वायर है, ये एक बैटरी के वी प्लस वायर पे जाएगा, और बी माइनस वायर दूसरे बैटरी के बी माइनस वायर पे जाएगा, और ग्राउंड ये रिफरेंस माइनस पे जाएगा, और ये ग्राउंड हमारा बैटरी के ग्राउंड पे जाएगा। तो इस प्रकार का आपको ये कनेक्शन करना पड़ेगा, जो कि हमें पावर देगा। ये हमारा पावरिंग चीज, पावरिंग कनेक्शन। बट यदि आप कोई और EMG sensor use, or if you are using some different kind of EMG sensor, then you can use the different kind of, you know, different kind of powering system. Some EMG sensor don't need this 9 volt battery. Some work on 3 volt lithium battery. So this connection depends on the
kind of EMG sensor I am using this EMG sensor, so connection could be like this. And then the output of this EMG sensor is signal pin. This signal pin gives the analog output. So this signal pin goes to analog pin of the microcontroller, whatever microcontroller you are using. If you are using Arduino, then you can give that analog output of that Pro Micro, or if you're using the RP2040 board or any microcontroller that you are using based on Arduino ID, you can attach to that analog pin of that microcontroller, and the ground pin to the ground pin like this. So the connection of the basic connection of the thing is this. So after doing this, and then we will create a code like this. You can see the code. This is the code. So suppose that I have attached the analog sensor pin or to the analog 7. So I have declared that sensor pin is analog 7, and then we will create a setup function, and the serial baud rate. This serial baud rate helps us to get the data on the serial port. So here I am using the two serial ports, serial dot begin or serial one dot begin, whatever the serial port you have in the Arduino. And after that we will read that an, analog reading of that sensor. So after getting the analog reading of the sensor, we will transfer that sensor reading to the serial port. So after this code, this very small piece of code, just 3 to 4 line of code, and then you have to select the right port number and right port, and then you have to upload this code. After uploading this code, you can attach attach you can connect these whole components, the sensor and Arduino and the battery like this. And after doing this, you need to let me open the camera window. So after doing this, here in the on the camera, you can see my arm. So this is the arm. So this is the arm, and here I have these electrodes. So these are the three electrodes. These are the three electrodes need to be connected on the body. So suppose that you are trying to control this robotic uh, hand, its fingers and this wrist movement. Then you need to attach these electrodes around this area. But if you are controlling the other part of this robotic hand from from this part of the hand movement, like like this part of the hand movement, then you have to put the electrode in this part of the hand movement. So it depends on which part of the hand you want to control. If I want to control these fingers and the wrist, then I have to put the electrode in this part. Or if I want to move the hand using this part, then you have to connect the electrode at this part. तो आपको ये इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना पड़ेगा. तो ये इलेक्ट्रोड में आप जैसा कि देख सकते हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है और एक येलो है. आपका ईएमजी सेंसर के हिसाब से ये इलेक्ट्रोड अलग भी हो सकते हैं, अलग कलर के भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको 3 या 2 इलेक्ट्रोड मिलेंगे. तो जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है वो डायरेक्टली आपका अटैच हो जाता है, जो कि एक अपर पार्ट में होता है, जो कि एक बोन होता है, और एक लोअर पार्ट में होता है जो मसल के पास लगेगा. पर इसमें 3 इलेक्ट्रोड है. तो एक इलेक्ट्रोड जो आपका रेड इलेक्ट्रोड है, ये जो रेड इलेक्ट्रोड है, लेट मी टेल यू, ये जो आपका एक ये पूरा वायर ये हो गया है. वायर को मैं थोड़ा सीधा कर दूं, थोड़ा वायर चेंज हो गया. हाँ, ये जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड जो रेड इलेक्ट्रोड है, ये आपका मसल के ऊपर लगेगा. तो सपोज दैट मैं यहाँ पे रिस्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ, इस मसल के ऊपर लगेगा, इस मसल के ऊपर लगेगा ये. और एक इलेक्ट्रोड जो है आपका बोन के ऊपर लगेगा, जहां पर कि कोई भी मूवमेंट नहीं है. तो सपोज दैट ये इलेक्ट्रोड है, इसको मैं बोन के ऊपर ऐसे चिपका लूंगा, ये देखो ऐसे बोन के पास. या फिर अगर ये रिस्ट से कंट्रोल कर रहे हो तो रिस्ट का बोन जो है यहाँ पे ये लगा देना. एक इलेक्ट्रोड आपका मसल जहां से मूवमेंट होगा, एक इलेक्ट्रोड जो आपका बोन है उसके ऊपर लगेगा, और एक इलेक्ट्रोड कोई रेफरेंस के ऊपर लगेगा जहां पर कि कोई नहीं, कोई ये वोल्टेज नहीं है. इस प्रकार से आपको अपने शरीर पे इलेक्ट्रोड को अटैच करना पड़ेगा, आपको बायो सिग्नल को ये करने के लिए. तो इलेक्ट्रोड के अंदर एक जेल होता है. तो ये सारे इलेक्ट्रोड के अंदर एक जेल होता है, जिसके कारण ये आपका इलेक्ट्रोड इस प्रकार से चिपक जाएगा. आप देख लो ऐसे करके. तो आप इलेक्ट्रोड लगा लेना. कैसे लगाना, एक रेड इलेक्ट्रोड जो आपके मसल के ऊपर लगेगा, और एक इलेक्ट्रोड जो है आपका
ये बोन के ऊपर लगेगा और एक इलेक्ट्रोड आपका रेफरेंस मिडिल में लगेगा कहीं पर। तो ये इलेक्ट्रोड के जेल जेल के साथ रहेंगे। फिर ये इलेक्ट्रोड सब लगा लेने के बाद अभी आप अपने सेंसर को टेस्ट कर सकते हो। तो जो मैंने कोड आपको पहले दिया था, द कोड दैट वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड आफ्टर अटैचिंग द electrode like this on the arm, one on the bone, one on the muscle, and one on the in the middle of the in the middle of the other two electrode. After attaching the electrode and uploading the code, you will have to plug the other end of this electrode. This is the elect, electrode wire, and this is the output of electrode wire, aux pin. So you have to put this aux pin in this, like this. You can see uh, here I have a aux pin. So I have to attach this aux pin like this. You can see I have attached this aux pin like this. So after attaching this, you have to power this with two battery and connect this sensor analog pin with the analog pin, and then you have to plug the Arduino. And after plugging that and getting all the electrode, you will able to read the sensor up and you can get the plotting of the sensor on Arduino ID plotter. So let's use to the PCA screen. So on the PCA screen, I will show you the video how how the data will be shown. So here I have attached the electron on the hand. So whenever I do some movement in the hand, whenever I do some movement, तो जब भी मैं अपने हाथ में कोई मूवमेंट करूंगा तो देखो यहाँ पे सिग्नल में इंक्रीज होगा। ये देखो जो हमारा जो बायो सिग्नल है वो इंक्रीज होगा जब भी मैं हैंड को मूव करूंगा। ये देखो अभी मैं हैंड को मूव करूंगा तो बायो सिग्नल इसमें प्लॉटर में रीडिंग आएगा। ये देखो आ रहा है रीडिंग। इस प्रकार से जब भी आप हैंड को मूवमेंट करोगे तो हमारा बायो सिग्नल रीड होगा और सेंसर वो सिग्नल को ट्रांसफर करेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा सेंसर काम कर रहा है और बायो सिग्नल रीड हो रहा है। जब भी हम हैंड को मूवमेंट का करने का कोशिश करेंगे अब हमारा हैंड मूवमेंट हो रहा है और ये सिग्नल रीड कर रहा है। इस प्रकार से आपका बायो सिग्नल रीड हो रहा है। नाउ यू कैन सी द रीडिंग्स ऑफ योर बायो सिग्नल। So this part is done. We are not getting the biosignal of our body. Now let's talk how these signals how, uh, uh, how this sensor read the signal. So basically what happened whenever you move the hand like this, like whenever I move the hand, some electrical energy is generated in the muscle, at the muscular level. So in between the cells. So whenever the muscle cells expand or contract, some electrical energy is generated. Those electrical signals sent by the mind, and those electrical signals in the body is generated. And this sensor, this electrode sensor, what do they read those small amount, very small amount of electrical signal that is generated in between the muscles, and this signal get read by the sensor by using different amplifiers. So these small electrical signal generated for the body captured by this electrode, and these signals are amplified by the sensor and then give the output on the serial plotter like this. So everything is set. Now we understand how these EMG sensor works. The electrical signals get captured. So after this, you have to do you, you have to do some setups on the of the prosthetic hand. So on the prosthetic hand, whatever the prosthetic hand you are using, you have to assemble the prosthetic hand like the fingers and then the servo motor inside the prosthetic hand like this. So if you're using the in-move prosthetic hand, then you will get one part like this. Then you have to attach the servo motor like this inside the prosthetic hand, and then the servo motor like this. So after attaching the servo motor like this is inside the prosthetic hand, and then the finger like this inside the prosthetic hand, and then you will get the details of assembling of prosthetic hand, whatever the prosthetic hand you are using. Like I am using the prosthetic hand of in move robot, so you will get the assembling whole assembly documentation of that in move prosthetic hand in, in their website. So if you're using open bionic prosthetic hand or any other prosthetic hand, you will get the
you will able to get the particular documentation how to assemble the prosthetic hand and use. So after attaching the servo motor with the prosthetic hand, assembling of the prosthetic hand, you need to connect the servo motor, those servo motor to the Arduino like this, to the Arduino like this, and then you have to connect a Bluetooth module that will receive the signal wirelessly from your muscle signal. So here I have attached the Bluetooth SC05. So you also need a Bluetooth SC05. So after this, you have connected the servo motor for the prosthetic hand and the Bluetooth for the prosthetic hand. Uh, Prosthetic hand. You can put this whole component inside the prosthetic hand, and then like like in camera video, your prosthetic hand is get ready. So everything is set in this prosthetic hand. The Bluetooth, the servo motor, and everything is set in this prosthetic hand, and then you can you can attach the cable wire and power the prosthetic hand and the component inside this uh, uh, at, at this port. As you can see, let me show you the port. Here I have the port. So here at this port you can attach the power cable and all these things. So this prosthetic hand is ready. Now we need to upload the code on this prosthetic hand. So this is the prosthetic hand receiver code. So here whatever the Bluetooth we have attached with the Arduino, that is that Bluetooth continuously reads the gets the reading from the another Arduino Bluetooth that is connected with our sensor. So here we have used the serial dot parse int. So this function serial dot parse int continuously parses the continuously captures the or receives the integer value that is being transferred from the uh, first transmitter part, this part. So so in the first circuit like this, you can see in the window like this in the first circuit, you have to also attach a Bluetooth HC05 here, and you have to pair both the Bluetooth SC05. So this sensor part will transmit the data over Bluetooth to the receiver part, this receiver part circuit, and it will receive the signal. So after getting those code uploaded, and in both transmitter part and receiver part, can you, uh, you can you can attach the electrode like I have already previously told you, to the hand, like this. So and then connect this aux cable to this sensor, this aux cable to the sensor, this aux cable to the sensor, like this. uh, and 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 after that you are ready to do the jobs. So whenever you move the hand, जब भी आप हाथ को हिलाओगे, तो ये जो सिग्नल का जो डेटा है वो इस प्रकार से कैप्चर होगा, और इस प्रकार से वो आपके आपके हैंड के मूवमेंट के साथ मूव होगा, जैसा कि ये देख रहे हो। इस प्रकार से वो मूव होगा। ये देखो, जब भी मैं हाथ को मिलाऊँ मूव करूँगा, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा इस रोबोटिक हैंड में, और ये हमारा रोबोट हैंड इस प्रकार से मूव होगा। तो ये देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट ये बहुत ही सिंपल सा, एक हमारा ट्रांसमीटर है, एक हमारा ब्लूटूथ ट्रांसमीटर डिवाइस है, जो कि सेंसर के डेटा, जो हमारा जो ईएमजी सेंसर है, ये जो ईएमजी सेंसर है, ईएमजी सेंसर का डेटा को ले करके आपको रोबोट हैंड में डाल रहा है। एक जो रोबोट हैंड का पार्ट है, वो हमारा रोबोट हैंड कैप्चर कर रहा है उस ईएमजी सेंसर के डेटा को, और उसके मुताबिक वो सर्वो मोटर को मूव कर रहा है। जब भी हम अपने हाथ को मूव करेंगे, हमारे ईएमजी सेंसर डेटा को रीड करेगा, और अगले पार्ट में ब्लूटूथ उसको रिसीव करके वो एक्शन करेगा, लाइक दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखो, इस प्रकार से आपने एक प्रोस्थेटिक हैंड बनाया, जो कि आपके बायो सिग्नल से ही कंट्रोल हो सकता है। तो इस प्रकार का प्रोस्थेटिक हैंड को आप फर्दर डेवलप कर सकते हैं एक प्रोडक्ट के रूप में, लाइक दिस आई हैव शोन यू द वीडियो। लेट मी शो यू द वीडियो अगेन ऑफ दैट थिंग, like 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 this video. So you can do further R&D on this, and you can make a prosthetic hand like this, that can be controlled, that can be attached like a natural hand, and that can be controlled by your human body like a natural hand with your thumb. So basically you are moving this part of the muscle, and this signal is read, and these fingers will open and close.
So this will helps us in making the prosthetic hand for the disabled people, or if this will helps us making very advanced robot. Whatever the doubts or question you can ask me, and this whole project, the documentation of the project with the code and every details of this project is published on electronsforyou.com. So you, in order to know that, here is the my window. You have to just search EMG prosthetic hand and EFY. Now, after EMG prosthetic hand EFY. After tapping this, you will get the project like this in the. So this is the laptop screen, and you have to just search EMG prosthetic hand EFY on the Google. After searching that on the Google EMG prosthetic hand, you will get the project link, and on the project link you can get the whole project and with the source code like this. You can get the whole project and documentation of this, how to build this, every details. And if you further need any kind of help, you can ask me right away. So this is how the things work. So if you have any doubt, any question, you can ask me. We have few doubts, like where else you can use this EMG sensor apart from the hand. You can use this EMG sensor in many kind of projects. Like you can use this kind of EMG sensor in biosignal analysis, or you can use this EMG sensor in analysis of stress on the muscles. Like sometimes you get a stress or a strain on the muscle while doing exercise, or while walking or jumping. So you can use this kind of EMG sensor in getting the data of those muscles, how powerful your muscle is while walking, what kind of signal and how powerful signal your muscle generate while you jump or walk. So there are lots of areas where you can use the EMG sensors. So next question, approx cost of EMG sensor. The approx cost of the EMG sensor is around 1,000 to 2,000 to 5,000 or 10,000. So there are lots of EMG sensor. What I have used, the EMG sensor that I have used is around 2,500, something like that. So around that, those 2,000 or 1,000, you will get the EMG sensor for the low cost for your basic project requirement. And second question is, uh, any more question you can ask me. So any more question, कोई और क्वेश्चन जो कि आप पूछना चाहते हो, और आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि मैं किस में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, हिंदी में या इंग्लिश में। आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि मैं अगला सेशन किस पे करूँ, हिंदी या इंग्लिश, और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं अभी 1 मिनट के लिए और वेट करूँगा। तो आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हमारे पास 2 डाउट्स आए थे, तो मैंने उनका बता दिया। लाइव सेशन का ये होता है कि आप पूछ सकते हो मुझसे लाइव, कोई भी डाउट हो आप मुझे लाइव पूछ सकते हो। आई एम जस्ट थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग। आप सभी लोगों को थैंक्स। उम्मीद करता हूँ यू हैव, आप लोगों ने कुछ न्यू नॉलेज प्राप्त किया होगा। I wish that you have learned something from this session, and so I'm closing here now. Thank you.